हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? व्हाट अबाउट योर स्टडीज एंड हाउ यू आर टेकिंग एंड पिकिंग योर क्लासेस एंड गिविंग योर फुल टाइम? ओके, first of all, I would the topic I have selected, that is the types of variable. One of the most important area in research, because whenever the theoretical framework or hypothesis is created, so naturally I think we do need to have a relationship between or among two or more than two variables. So that's why this is a highly essential to know what different types of variable are used to develop the theoretical framework and to show the interrelationship. So this is our efforts we would made to give you the true sense, because you may be able to know such phenomena. Ladies and gentlemen, first of all, the question is, what is a variable? So I just ask you, okay, okay, because you are having some type of objects visualizing in this slide. So naturally, for the description of the variable may be defined is any characteristics or quality that varies among the members of a particular group. Example, gender, eye color, motivation. The individual members or class of objects, however, should differ or vary to qualify the class as a variable. So actually, once we talk about gender, so gender is a variable in a sense, like because the gender may be male and may be female. So eye color, we do have a different eye colors. So motivation, a sense of involvement, commitment is not a same among all members. Even motivation of one individual may vary with the passage of time. If today you are highly motivated, so you may be less motivated tomorrow. It means this ability of the motivation to change and to keep on change with the passage of time that make this phenomena as a variable. In parallel to the variable, naturally there is a constant. This concept need to be understood heavily. The reason is that because in some form, in some research, once we are describing our theoretical framework, तो वहाँ हमें कांस्टेंट को भी चीज़ों को रखना होता है, और लिहाजा वन शुड बी नोइंग व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट. तो कांस्टेंट इज अ characteristic or quality that is same for all member of a particular group. अगर वो तमाम मेंबर्स के लिए वो क्वालिटी वही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, तो नेचुरली दैट इज़ अ कांस्टेंट. अगर एज इंसान की नहीं बढ़ती और मेरी और आप सब लोगों की एज एक जैसी है और वो तब्दील नहीं होगी, तो हम उसको क्या नाम देंगे? वी आर टॉकिंग कांस्टेंट. लेडीज जेंटलमैन, एक और ज़रा डेफिनेशन देखिए. वेरिएबल क्या है? एनी करेक्टरिस्टिक विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू सच एज एज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जेंडर एटसेट्रा. वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं. So now the question is that is the example of variable हम देना चाहते हैं. Gender is a variable. It can take two values, male and female. If female is there, male is there. So that's why this tendency and characteristics of changeability genetically so makes this variable. Now, marital status is a variable. It can take on value
of never married, single, married, divorced or widowed. ये देखा, हम कहते हैं कि समटाइम एक बंदा सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है. सो दिस इज व्हाट अ वेरिएबल में बी अ सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो सकती है. So this is the example we have kept in front of. So once the concept of variable is clear, the next is types of variables in research. Ladies and gentlemen, types of variable में हम अगर देखेंगे तो there is independent variable, dependent variable, moderator or moderating variable, or intervening. Intervening variable may be called a mediating variable. Please remember, आप इसके दो concepts होते हैं और mostly books में mediating variable भी use होता है, which you should be knowing about this one. Control variable and extraneous variable. तो इनमें जो पहले चार हैं खसूसन वो बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज आई वी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, डी वी, मॉडरेटिंग, इंटरवीनिंग, कंट्रोल, एक्सटेंस. नो, जो कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी रिसर्च में है वो आपका डिपेंडेंट होता है, चूँकि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च एज वेल एज कॉल्ड. चूँकि जिसको आपने एक्सप्लोर करना है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा डिपेंडेंट वेरिएबल affected by the independent variable. It responds to the independent variable. Mean कि जब आई वी के रिस्पॉन्स में कुछ होता है तो उसकी वजह से it does have impact on something. So where it is being impacted, affected naturally, that variable would be called a dependent variable. So far as अब देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग कि जी प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड पे इम्पैक्ट होता है, तो प्राइसेस वुड बी कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, व्हाइल एनी चेंज इन डिमांड, बेसिकली डिमांड क्या है, वो ह्यूमन कस्टमर बिहेवियर है. तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं, अब प्राइसेस का बढ़ना इंडिपेंडेंट है, जबकि डिमांड में कमी होना या उसमें श्रिंक होना, दैट इज व्हाट इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो लॉट ऑफ एग्जांपल कैन बी गिवन, बट आई जस्ट पिकिंग द वेरी सिंपल एग्जांपल. सो वेरिएबल दैट इज presumed टू इन्फ्लुएंस अदर वेरिएबल. presumed टू इन्फ्लुएंस का मतलब इट इज कंसिडर्ड टू बी, कि जब हम समझते हैं कि उसके चेंज होने से वो इम्पैक्ट करता है, तो इट इज presumed कॉज, वेयर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज presumed इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट, दूसरे लफ्ज में हम presumed कॉज का मतलब है कि उस चीज़ के में चेंज आने की वजह, दैट इज आई वी इज देयर. तो जो चीज़ चेंज, किसी चीज़ को चेंज करने की सलाहियत रखती है वो आई वी है, और जो चेंज होता है दैट वुड बी कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. एग्जाम्पल ज़रा आप देखिएगा. हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम. Mean higher education is independent variable, higher income is dependent variable, better occupation may be called intervening variable. वो हम आगे चल के बात करेंगे. It is causally if affected by education and itself affect income. तो naturally I think हम simple ये कहना चाहते हैं कि जिनकी education, higher education में जितना जाते हैं उनकी income उतनी ही बढ़ती है. इसका मतलब है more and more change in the higher education, more and more change in income. So this income change is due to be called the higher education. Moderating variable is one that has a strong contingent effect on the independent and dependent variable relationship. That is the presence of third variable, the moderating variable. Remember, अगर आप देखेंगे तो hours of study is an independent variable, exam score is a dependent variable, और उसके दरमियान IQ. Remember, ये वेरिएबल इनके दरमियान